Students, this is our first unit, units and dimension of class 11, and this is our 7th video lecture. Applications of dimensional analysis was going on, and the first application of dimensional analysis, it means to find the dimensions of any physical quantity, has been done, and this is second application, checking the dimensional correctness of a physical equation. यानी किसी भी फिजिकल इक्वेशन की डायमेंशनल करेक्टनेस को हमें फाइंड आउट करना है. सो अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग ए फिजिकल इक्वेशन विल बी डायमेंशनली करेक्ट. एक फिजिकल इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट होगी इफ द डायमेंशंस ऑफ ऑल द टर्म्स अकरिंग ऑन बोथ द साइड्स आर द सेम. यानी किसी इक्वेशन के एक फिजिकल इक्वेशन क्या होती है, LHS और RHS दो पार्ट्स होते हैं. अगर उन दोनों पार्ट्स में जितने भी टर्म्स आए हैं उनकी डायमेंशन सेम है, इट मीन्स द इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट. दिस प्रिंसिपल इज बेस्ड ऑन द फैक्ट, ये प्रिंसिपल इस फैक्ट पर बेस्ड करता है ओनली द फिजिकल क्वांटिटीज ऑफ सेम काइंड कैन बी एडेड, सब्ट्रैक्टेड और कंपेयर्ड. यानी सिर्फ सेम काइंड की फिजिकल क्वांटिटी ही एक दूसरे में ऐड की जा सकती है, सब्ट्रैक्ट की जा सकती है और कंपेयर की जा सकती है. दस वेलोसिटी कैन बी एडेड टू वेलोसिटी, नॉट टू फोर्स. यानी वेलोसिटी सिर्फ वेलोसिटी में ही ऐड होगी, फोर्स में ऐड नहीं होगी. तो लेट्स चेक द करेक्टनेस ऑफ ए फिजिकल इक्वेशन. फॉर एग्जांपल द इक्वेशन ऑफ मोशन. द इक्वेशन ऑफ मोशन मीन्स फर्स्ट इक्वेशन है v is equal to u plus at. तो LHS, dimension of LHS, dimension of LHS is equal to dimension of velocity v, because v is final velocity, u is initial velocity, a is acceleration and t is time. So dimension of v, it means lt minus 1. इसकी dimension क्या होगी, lt minus 1. And in RHS there are two terms and they are added. It means the dimension of both the terms will be same. So in RHS, dimension of u means dimension of velocity. So velocity is lt minus 1, and this is second term at. So dimension of at, it means dimension of acceleration into time. Dimension of acceleration is lt minus 2 into time is t. So lt minus 1. It means the dimension of both the terms in RHS is lt minus 1. Therefore dimension of RHS is lt minus 1. Since dimension of LHS is dimension of RHS, therefore equation is dimensionally correct. इक्वेशन क्या है, डायमेंशनली करेक्ट है. सो इन दिस वे वी कैन चेक द करेक्टनेस ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी ऑन डायमेंशनल एनालिसिस. हम डायमेंशनल एनालिसिस के बेस पे किसी भी फिजिकल इक्वेशन की हम उसकी करेक्टनेस चेक कर सकते हैं. ओके, सो दिस इज आवर फर्स्ट एग्जांपल. लेट्स डिस्कस few more examples. Example is in the second equation of motion, s is equal to ut plus half at square. S is the distance, u is the initial velocity, t is time, a is acceleration. So let's check the correctness of this dimensional of this physical equation. So dimension of LHS, it means dimension of distance, because s is distance and the dimension of distance is L. And in RHS there are two terms, ut plus half at square.
So we can write dimension of RHS is equal to dimension of UT plus half dimension of AT square. We will leave all the numerical quantities. हम जितनी भी न्यूमेरिकल क्वांटिटीज होंगी उनको लीव कर देंगे क्योंकि उनका डायमेंशन पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता, वो सिर्फ मैग्नीट्यूड के लिए होती है. डायमेंशन ऑफ UT इट मींस डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी इनटू टाइम प्लस डायमेंशन ऑफ एक्सेलरेशन इनटू टाइम स्क्वायर. Velocity dimension LT minus 1 into T plus dimension of acceleration LT minus 2 into T square. So this is L, it means L. Therefore dimension of LHS is again comes equal to the dimension of RHS. Therefore, since dimension of LHS is equal to dimension of RHS, so this equation is dimensionally correct. Dimensionally correct. In this way, we can do more examples because there are many physical equations in our syllabus in physics. तो फिजिक्स में बहुत सारी इक्वेशंस हैं, आप किसी भी इक्वेशन को करेक्ट कर सकते चेक कर सकते हैं, वो हमेशा डायमेंशनली करेक्ट ही होगी. ओके, दिस इज आवर नेक्स्ट एग्जांपल. वी हैव टू फाइंड द डायमेंशंस ऑफ A अपॉन B इन इक्वेशन. इसमें दिस इज द इक्वेशन F इज इक्वल टू A अंडर रूट x प्लस BT स्क्वायर. Okay, so where F is force, x is distance and t is time and A and B are constant. A और B constants हैं, हमें इनकी dimensions को find out करना है और ये equation हमें दे रखी है. There is one single concept of this principle, since physical quantity of same kind can be added, subtracted or compared. Okay, it means dimension of A under root x will be equal to dimension of F and dimension of BT square is equal to dimension of F. यानी this is the equation F is equal to A root x plus BT square. Okay, so अगर हमने इनको ऐड किया है, इट मीन्स द डायमेंशन ऑफ F A root x and BT square will be same, यानी तीनों की तीनों क्या होंगी, सेम होगी. तो हम इसी कॉन्सेप्ट से इनकी डायमेंशन फाइंड आउट करेंगे. डायमेंशन ऑफ A root x इट मीन्स A L की पावर 1/2 and dimension of F is ml t minus 2. So the dimension of A is ml t minus 2 upon L की 1/2. This will go ml 1 minus 1/2 t minus 2. It means ml 1/2 t minus 2. This is the dimension of A. Okay. Similarly, the dimension of B is B find out कर रही है t square and dimension of ml t minus 2. So B is equal to ml t minus 2 upon t square and it is ml t minus 4. Okay, so dimension of A and B are found A and we have to find the dimension of A upon B. So A upon B, it means dimension of A upon B, it means dimension of A upon dimension of B
means ml 1 by 2 t minus 2 and upon ml t minus 4. Just adjust the powers. M is cancelled with m, so this will become L m1 minus L 1 by 2 minus 1 and t minus 2 plus 4. So this will be ml minus 1 by 2 t 2. So this is the dimension of A upon B in this physical equation. This is another example, means we have to find the dimension of A and B in van der Waals equation. This is van der Waals gas equation. P plus A upon V square is equal to V minus B is equal to RT. It means the same concept, the same type of physical quantity can be added or subtracted. It means if P is added to A upon B square, therefore dimension of A upon B square is equal to dimension of P. Sorry, where P is pressure, V is volume, T is temperature, R gas constant, and A and B are constant. So dimension of A upon B square is equal to dimension of P, A upon L cube, V volume and square is equal to T. So dimension of pressure is equal to force per unit area. It means dimension of force upon dimension of area, because F upon A. So A upon L की power 6, dimension of force is ml t minus 2 and dimension of area is L square. Okay, pressure is equal to force per unit area, and dimension of force upon dimension of area, dimension of force is ml t minus 2 upon L square. Let's solve this. We will get A is equal to ml t minus 2 into L6 or upon L square. 2, the power of L will be 6 plus 1, 7 minus 2, it means 5 and T minus 2. This is the dimension of A in van der Waals gas equation, ml5 T minus 2. And similarly, there is a term V minus B. So dimension of B is equal to dimension of B, and dimension of B is volume L cube. So dimension of B is L cube and dimension of A is ml की पावर 5 t minus 2. आपके एक्सरसाइज में ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं और आप किसी भी क्वेश्चन से इस टाइप से आप डायमेंशन फाइंड आउट कर सकते हैं. सो लेट्स स्टार्ट योर NCERT एक्सरसाइज with the help of these concepts. Okay, now we will discuss the third and final application of dimensional analysis.